Hello everyone. Today in this video we will discuss about what is thrust and pressure. So firstly, let's understand with the help of two examples. Example number first we have when you wish to fix a poster on the bulletin board, you will have to press drawing pins with your thumb. While doing so, you apply a force on the surface area of the head of the pin. This force acts perpendicular to the surface area of the board and is known as thrust. And second example says that when you stand on the loose sand, your feet go deep into the sand. When you lie down on the sand, you will see that your body will not go that deep in the sand. In both cases, the force exerted on the sand is weight of your body, which is referred as the thrust. In the first case, the force acts on the smaller area on the sand. However, in the second case, the same force acts on the larger surface area. The effects of thrust on sand is larger while standing than while lying. It means that pressure on the sand is larger while standing than while lying. So, with the above two examples, we can say that when the area is smaller, then force is maximum. When area is larger, then force is smaller. So, स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी पोस्टर को बुलेटिन बोर्ड को पे लगाते हैं तो उसमें देखते हैं जो ड्राइंग पिन्स होती है उसको हम थंब के द्वारा प्रेस करते हैं तो वो आसानी से ड्राइंग बोर्ड में चला जाता है। जबकि सेकंड एग्जांपल ये कह रहा है कि जब हम किसी लूज सैंड में खड़े होते हैं तो हमारे फीट का जो एरिया है वो हमारे पूरे शरीर के एरिया से कम होता है। तो आसान ये जब हम खड़े होते हैं तो उसमें साइड में पैर चला जाता है और जबकि पूरा शरीर यदि उस पर हो तो वो नहीं जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि जो एरिया यदि कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और एरिया ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। सो लेट अंडरस्टैंड विद द two examples. Let us define that what is thrust. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. Means कोई भी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। और थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स है। सो सिंस द थ्रस्ट इज फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। सो आई थिंक आपको थ्रस्ट ये समझ में आया होगा। ठीक ना, किसी भी एरिया पे यदि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है तो वो थ्रस्ट कहा जाता है। ठीक। सो ये गिवन दैट वन न्यूमेरिकल ऑन थ्रस्ट, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज placed on the table. Find the thrust exerted by block on the table. And here given that G equal 9.8 meter per second square. So let's solve this numerical on the thrust. I repeat again, a rectangular block of mass 10 kilogram is placed on the table. Find the thrust exerted by block on the table, and G equal 9.8 meter per second square. So here given that M, mass of block equal 10 kilogram, and the value of G equal 9.8 meter per second square. So you know that thrust apply on the body equal weight of the body. You should know about this weight of the block. Here given that block, so the thrust equal weight of the block, and you know that the weight of block, the formula of weight of the block equal W equal mg. Then m equal mass, here given that 10 kilogram, and the value of G equal 9.8. then after multiply it's become 98 Newton. A rectangular block of mass 10 kilogram is placed on the table. Find the thrust exerted by the block on the table. Then in this way here it's find out that the thrust becomes 98 Newton. And later discuss about next topic, pressure. The thrust or force acting on unit area is called pressure. Pressure P is represented by P. P equal thrust upon area, and you can write force by area, and P equal F upon area. This is the formula of pressure, P equal F upon A.
The SI unit of pressure is Newton per meter square. Here the SI unit of pressure is Newton per meter square. It is also called Pascal on the honor of scientist Blaise Pascal. It is denoted by PA. 1 Pascal equal 1 Newton by 1 meter square. Let us discuss about what is 1 Pascal. If we take F equal 1 Newton and area equal 1 meter square, then the pressure is 1 Pascal. So in this way we can define when a force of 1 Newton act on the surface of area of 1 meter square, then the pressure is said to be 1 Pascal. Okay, and next topic, factors on which pressure depends. मीन्स प्रेशर जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो नंबर फर्स्ट है, फॉर ए गिवन सरफेस एरिया द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मीन्स जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स के. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स मीन्स if maximum is pressure then force also maximum. We can say thus the pressure is more if force acting on a given area is large. On the other hand, pressure is less if force acting on a given area is less. So for example, when two blocks having same area but one is made of wood and other is made of iron are placed on a heap of sand, the pressure exerted by iron block will be more than the pressure exerted by wooden block because the iron block has more pressure than the wooden block. And second factors आपको ये समझ में आएगा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के. फोर्स मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा. ठीक. एंड सेकंड, फॉर ए गिवन सरफेस गिवन फोर्स ऑफ और थ्रस्ट, pressure acting on the surface is inversely proportional to the area of the surface on which force act. means यदि एरिया सरफेस का मैक्सिमम है तो प्रेशर कम लगेगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा जब एरिया मिनिमम होगा. ठीक ना. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन ए पिन हैविंग ए पॉइंट एंड एंड ए नेल हैविंग ब्लंट एंड और pressed against a cardboard by applying the same force, the pin penetrate deep into the cardboard than the nail. In this case, force acting is same, but the area under the tip of pin is less than under the tip of the nail. Hence, pressure exerted by pin is more than by the nail. And the next topic, what is applications of pressure in everyday life? Number first application, the school bag are provided with wide strap. This help to reduce pressure on your shoulder. जो स्कूल बैग्स होते हैं उनका जो पट्टा होता है जिससे लोग टांग के चलते हैं वो चौड़ा बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि वो प्रेशर को रिड्यूस करता है. यदि उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा शोल्डर पे और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. ठीक नहीं, इसीलिए उसकी स्ट्रैप को जो है वो वाइड बनाते हैं. एंड नंबर टू, द शार्प नाइफ कट द ऑब्जेक्ट इजीली देन ए ब्लंट नाइफ. एक शार्प नाइफ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जल्दी कट कर सकता है, काट सकता है किसी ब्लंट नाइफ की तुलना में. क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया है वो आपका कम होता है. एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट को जल्दी काट देगा. ठीक ना. और ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगेगा, इसलिए वो जल्दी ईजिली नहीं काट सकता. ठीक. एंड नंबर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कैमल वॉक्स ईजिली ऑन द सैंडी सरफेस देन ए मैन. को कैमल जो है वो किसी सैंडी सरफेस, किसी बालू वाले सरफेस पे तेज़ी से चल सकता है, दौड़ सकता है मनुष्य की तुलना में. क्यों? क्योंकि उसका जो उसके पैर का जो एरिया होता है वो मनुष्य के पैर के एरिया से मैक्सिमम होता है, जिसके कारण वो बालू में धंसता नहीं है और वो आसानी से चल सकता है. ठीक ना. एंड नंबर फोर, ए शार्प निडल pierces द स्किन ईजिली दैन द ब्लंट निडल. कोई शार्प निडल है तो हमारी स्किन में जल्दी घुसती है और दैन द ब्लंट निडल. ठीक ना. तो ये एप्लीकेशंस थे प्रेशर से रिलेटेड जो डे टू डे लाइफ में इंसिडेंट होते हैं. एंड नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स. सो फर्स्ट we have to know that what is fluids. The substances which can flow under the effect of external force are called fluids. वे substance जो flow हो सकते हैं
एक्सटर्नल फोर्स के लगाने पे जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक, मतलब वे तरल पदार्थ जैसे लिक्विड गैसियस फॉर्म में जितने होते हैं वो सब जो फ्लो कर सकें वो क्या कहे जाते हैं, फ्लूइड्स कहे जाते हैं। ठीक ना। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। जो पदार्थ फ्लो करते हैं वो किसी सरफेस में रख दिए जाएं तो वो कैसे उस पर प्रेशर लगाते हैं। ठीक ना। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। सो कंसिडर ए बीकर फील्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। देखिए इस एक्सप्रेशन में हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी लिक्विड को यदि बीकर में हम रखते हैं तो वो लिक्विड उसके सरफेस पे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसा प्रेशर लगाता है। ठीक ना, और वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक, तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर के द्वारा जो वाटर का जो वेट है वो फोर्स के बराबर होगा जो बीकर पे लगेगा। ठीक ना, W इक्वल एम जी। वी कैन से द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ बीकर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द बीकर। ठीक, तो here given that W equal mg weight of the water and H equal height of the water, volume equal A into H, area into height, and area of cross section of beaker equal A, you can write. Then H equal height of liquid in beaker and A equal area of cross section of beaker. Then the weight of the liquid in beaker, we can say that the weight of the liquid in the beaker is W equal mass of liquid into G. Then W equal, what is mass of liquid? Mass of liquid, you can write volume of liquid into density into G, because the density equal mass by volume, then from this when we find out the value of mass, then it's become density into volume. Then here we write instead of mass, volume of liquid into density into G. Then put all these values. W equal the value of AH, the value of volume equal AH into density rho into G. Then W equal AH rho G. Then the pressure by liquid at the base, we can write pressure by liquid at the base, P equal weight by area. Then it's become weight equal AH rho G by area equal A. Then pressure P equal rho GH. This is pressure exerted by, expression for pressure exerted by liquid. P equal rho GH. In this way, expression for pressure exerted by liquid P equal rho GH means pressure of liquid depends on the following factors. Number first, density of the liquid. Pressure P is directly proportional to the density of the liquid rho, acceleration due to gravity G, depth of the liquid from the free surface of the liquid H.
प्रेशर जो है वो 3 फैक्टर से डिपेंड करेगा, रो पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द लिक्विड। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में यहाँ रखा गया है, वाटर फील्ड है इसमें, तो यदि यहाँ से हम वाटर को निकालें तो इसका रेंज मैक्सिमम होगा, और यहाँ से वाटर को निकालें तो इसका रेंज मिनिमम होगा। क्यों? बिकॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड। ओके, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, इसलिए यहाँ जो लिक्विड फ्लो